Assalamu alaikum students. Hope you are doing well. Today our second session and today is our second lecture. I'm going to start your class. My first lecture is for first year English. Okay, so I hope today I'll discuss. Yesterday it was the first class. Where some of the students they joined late. So today I just give you a review and we have some revision. तो हम रिवीजन करेंगे पहले थोड़ा सा मॉडल पेपर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी ने दे चेंज द पैटर्न एज वेल. तो लेट्स डिस्कस फॉर द 5 minutes देन वी विल कंटिन्यू we will go to the next step. Okay, as you can see that English paper model paper 2026, these are for first year class. Okay, you have the section A MCQs. These are 20 marks. Your prose, poetry, novel and grammar, these three topics are connected. This is purely knowledge based and it will be the MCQs, like you have the 4 choices and you have to attempt the one correct answer. Section B, short answer questions. Previous years, like 3 years, there was some confusion of the previous students, like first year class student, they have the different subsections, about 4 subsections, but now higher secondary board, they have changed the plan and they given you the 2 part sections. Like अगर section B है तो उसके 2 उन्होंने part किए हैं. एक part जो है B1 है और एक है आपका B2. B1 में what would you do? B1 में you will attempt 6 part questions. आपको प्रोज, पोइट्री एंड नॉवेल से, प्ले से आपको 10 questions दिए जाएंगे and you will attempt 6 questions. That would be really simple and that is really easy. You have the 10 question choice and you will attempt 6 questions. B1 and then second part B2. B2 is completely connected to your grammar. All the topics of your book, like active and passive voice, direct and indirect speech, and then your tenses, do as directed, and they have added the one new question as well. That is the one paragraph. It will be given to you, and there's the jumble words in the box. You will fill in the blanks with the correct word. Okay. So B2, you have to attempt 4 part questions. From B1 you will attempt 6 questions and from B2 you will attempt 4 part questions. Altogether it's 6 plus 4, 10 questions and each question carry equal mark, 4 marks. 10 by 4 mean 40 marks. Your section B would be 40 marks. Your section A MCQs, you have the 20 MCQs and each MCQ carry 1 mark. So this is the distribution of marking. And then next we have the B1 here. B1 we have the question answer, short question answer. You have to write down minimum 3 to 4 lines answer. Next B2, this is purely grammar. As you can see on the screen, the first questions, I read it for you. Proofread the following passage and rewrite it. कल भी मैंने डिस्कस किया था लिटिल बिट अबाउट प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग इट डजंट मीन कि आपने उस जो लाइंस हैं उनका जवाब देना है या उसको डिटेल में लिखना है. नो, यू जस्ट नीड टू write according and you need to proofread according to your grammar. Like you have to punctuate these lines, you have to you have to check the preposition, articles and any of the tenses. This is purely on grammatical. We will do the practice as well कि कुछ हम ले लेंगे 3 lines 4 lines के short paragraph और उसको हम प्रूफ रीड करेंगे. पहले मैं आपको जो पहले उसकी जो कंडीशन होगी वो प्रूफ रीडिंग के लिए देंगे, फिर उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे. दिस द फर्स्ट क्वेश्चन. ये आपका प्रूफ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड रीराइट, ये आपका 4 मार्क्स का होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चंस वुड बी insert suitable modal verb according to the instruction given in the bracket. Yesterday I have discussed in detail modal verbs. You have studied in your previous classes. I would again we do revise and we do revision of this modal verbs in detail, inshallah, hopefully in couple of classes. I would start from tomorrow, inshallah.
about your time is 40 to 45 minutes lecture, so last 15 minutes would be for grammar. Okay, let's see the first question of section B2. B2 mean purely it's gonna be grammar. You have the 3 to 4 lines, you need to proofread according to the grammar. Insert suitable modal verbs according to the instruction given in a bracket. जो ब्रैकेट में आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शंस क्या दी होगी कि मॉडल वर्ब्स की सिचुएशन दी होगी, आपको उसमें एडप्ट करना पड़ेगा. चेंज द नरेशन. जैसे आपने 9 and 10 में यू हैव स्टडीड अर्लियर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, दैट इज कॉल्ड नरेशंस, जिसमें एक डायरेक्ट स्पीच होता है, उसको मुख्तलिफ जो उनके डिफरेंट रूल्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, दैट इज द रियली इन डिटेल आई विल डिस्कस, एंड इंशाल्लाह आई होप के we will do the some of the exercise and we'll do the practice in the other classes, and then I will continue this. Inshallah, I will discuss the direct and indirect speech as well. That is called narration. Narration mean if you have any indirect sentence, you will convert in direct speech. If any of the sentence in direct speech, you would convert in indirect speech. Fill in the blanks by selecting the appropriate word from the box. आपने 9-10 में भी ये कर चुके हैं. You have already practiced it and you have already learned about this, कि you have the paragraph with 4 to 5 blanks and you have the box there and the words will be the jumble and you need to pick correct word for the correct sentence and blank. Okay, so you will fill in the blanks by selecting the appropriate word. Last but not least, you have the 3 questions there. The 4th question is do as directed. You are really understood about that, do as directed. There is the sentence of grammar and you have given the direction. Insert the articles, insert the preposition, change in tense, negative, change in assertive, change in past simple, change in present perfect, transformation of tenses, formation of tenses, articles, preposition. These are each questions carry 4 sentences at least, like ABCD, ABCD, ABCD. You will complete these 4 sentences. It will consider one answer, one question answer. Okay, so these are your 5 questions and you have to attempt 4 questions from the section B2 grammar. B1 I have discussed already. Next, section C. Today I'll discuss in detail. That's why I just showed you that slide. Section C, detailed answer questions. This is 40 marks as well. Your section B is 40 mark, your section C is 40 mark, and your MCQs are 20. It's all together. Maximum marks of your English first year paper is 100. Okay ji. Section C, you have the note there. Answer all the questions from this section. All questions carry equal marks. There are, you can see 3, 4, 5, 6. You have 4 questions there. Each questions carry 10 marks. 4 by 10, 40 marks. Okay, first questions you have, it's really important and most of the students, they are really confused about it. You have to practice and we will practice over here. We will discuss the compose the covering letter and CV for the data scientist, any of the, this is the example, data scientist, lecturer, software engineer, accountant, any of the topic they can give you and they will ask you the any of the post. There is can be any post. Okay, compose the covering letter and CV. Today my main topic is this. I'm going to discuss after 5 minutes. Compose a covering letter and CV. Be connected and most of the students will join. So this is really important topic today, and this would be the 10 marks, 5 marks for the covering letter and 5 marks for CV. And at the university level and you would apply for the job, you need to learn this, and this is really helpful for your practical life. Next question, write an essay to compare and contrast any one of the following. Compare and contrast, this is a new topic. As you know that your teachers in your previous classes, they have discussed there are different types of essays. This essay, descriptive essay, narrative essay, compare and contrast essay, argumentative essay, okay, biography, like my ideal personality, my favorite teacher. So this is the basically the type of the essay compare and contrast. I would discuss the pattern as well, and I would discuss most of the important topics with you, which will be helpful for your upcoming exam. Next, write a narrative account. Okay, this is really good thing.
There is no choice in 3 and question 3 and 4. There is no choice. Compose a covering letter and CV for the data for the post of any post. Okay, this is not a fixed data scientist. This is from your model paper. That's why I write it down. But any of the posts they will give you. But I'll give you the templates pattern. We will discuss it, and inshallah I'm confident it would be easy for you. And the next, you don't have any choice. Compare and contrast is a but you have the choice. It's gonna be 4 of the topics you would have, and you have to attempt one only. 4 or 3 topic you would have, like compare and contrast essays, and you would just pick it. Okay, next, there is a choice in question number 5. Section C, first year English, you have the choice in question 5. What is that choice? Write a formal report on anti-corruption day or something like that. This report mean festival, your school festival, your annual result, sports day at your college, any of the topic, you will write the formal report. Formal report, as you know about that, in formal report you have to use the really academic and really formal words in there, and that would be the really formal, like formal email, formal letter writing. So that is really good. Formal report I would discuss later on. Okay, write a narrative. There is the choice, or you have the choice of 2 topics, whether you would choose the formal report, or you have the another. Write a narrative account about the remarkable achievement of your life. Narrative account mean you would narrate a story, remarkable achievement of your life, your whatever in your life, your childhood, your school life achievements, any of the past story you narrated, and any unforgettable day of your life, yeah, any event, sudden event which happened and it was really mark on your in your life. So then you narrate the story, like it's a part of essay writing, but it's little different. I will discuss. This would be the 5 question number 5. You have the choice of formal report and narrative account. Okay, so this is, it's up to you. If you think that formal report would be easier for you, I would discuss, and then you just have the choice. Next, question number 6. There is no choice in there. Scene comprehension. This is really good for you. In the whole last year, your teacher and your college and any of the place, you have already studied and read about your all the text. The text is about your connected to your textbook. There are so many topics in your textbook. On 11th August 1947, Qaid-e-Azam speech, and then my bank account, and different, you have the topics really, technology savvy, technology revolution, and a visit to the Singapore. So these topics are connected. There's the passage there, so it would be taken from your textbook. Scene comprehension. Comprehension mean understanding. Read the following passage and answer the questions that follow. You have given the passage from your textbook, and you would follow the questions, and most of the questions you would get from your passage, and there's the meanings and synonyms as well, antonyms, and any of the grammatical question as well, and 3 of the questions and 4 of the questions that would be connected to your passage. So this is your section C, and today I'm going to discuss very important questions, which is 10 marks, covering letter and CV for the post of any post of. So we would discuss the pattern and what is covering letter. Basically we would discuss it first, because first of all we should need to know that what is covering letter, why we write the covering letter with CV. That is the main topic today. So now I have discussed yesterday as well the model paper, and I hope you really understand very good. And then now I would go to the next step, and I would discuss the covering letter and CV pattern, and what is covering letter, how many types of covering letter, what types of CV there, so what we call in CV. So we would discuss it. Okay. Okay, ji.
Covering letter. A covering letter is a one-page document that you submit as part of your job application alongside your resume. आपको अपनी resume या CV mean curriculum vitae. Curriculum vitae, this is the Latin word. CV we call in short CV and resume both are the same, there is no difference. Okay, so CV or curriculum vitae, it's alongside with the purpose of covering letter is to introduce you and briefly summarize your professional background. CV, it is a showcase, it will show you what you have done. Okay, and it scan your professional, academic, your personality and your activities, your hobbies, your achievements. CV. But covering letter, this is called supporting letter as well. We call cover letter, and when we alongside with the CV, then we call it covering letter. Covering letter would describe you more and would describe your interest, would explain your keen interest to join this organization and why they should select you and why they would call you. That is called a pursuing letter as well. Okay, there is the main purpose of covering letter is to introduce yourself to the employer. Employee mean you are going to apply for the job, you are the employee, and employer your company where you going to apply. Any firm, any organization, any institution, any of the company, limited company, government sector, so that will call employer. Employer is the owner of the company, basically it's a company. To explain your interest in the job, it would explain your interest, how interested to join for this job and how keen interest you are taking to join this job. Okay, to highlight your relevant skills and education. Your relevant skills mean why you choose me, why would you call me for interview. The simple formula is your relevant skills. Most of the organization and most of the companies, they are looking for the candidate who got experience and who got the relevant skills for this particular job, this particular field, and your education and your skills both should coincide and meet to your experience and to your post. To persuade the employer to read your CV. Okay, covering letter, when we email the covering letter, so it's pursue to employer to open your CV and look at your CV and call you for interview. Okay, that's fine. Next, basic structure. This is basically a basic structure of your covering letter. Sender's address. Like, let's suppose I am going to send the letter, covering letter. So first of all, on the top, on the left side, I would write my address, like applicant address. Applicant या incumbent उम्मीदवार को कहते हैं जो किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है. तो इनकम्बेंट और एप्लीकेंट की सबसे पहले टॉप ऑन द लेफ्ट उसका एड्रेस होगा. Then next date आएगी. That is the most important part. Any professional field, any professional letter or any professional transaction, you should know the date and time, and any of the signature, any of the professional signature, you must sign it because date is the most important. You must sign, and under the sign you write down the date as well. Receiver's address, receiver's designation, manager, HR manager, deputy manager, director, and any of the guy you are going to sending the letter, the covering letter, so that is called receiver's letter. The left side, sender's address, and then date, and then receiver's address. Okay, this is basically I'm talking about the structure of covering letter. Okay, covering letter is, once you understand the covering letter, you would write it really clear and really easily. And I would give you some of the sentences which really helpful for you to write down the really good covering letter. Okay, next, salutation. Okay, salutation mean greetings भी कहते हैं इसको. Salutations mean dear sir, madam. Okay, then we have the body. जब salutation हो गया, dear sir, madam हो गया, if you are confident, if you are sure कि सामने वाला जिसको आप भेज रहे हैं वो फीमेल है तो मैडम लिखिएगा, मेल है तो सर लिखिएगा. ओके जी, उसके बाद आएगी बॉडी. बॉडी में you started, I am writing this letter to applying for this job
और मुझे कहाँ से पता चला और कैसे हुआ और मैंने इसी फील्ड में ये किया हुआ है, तो दैट इज आई विल डिस्कस लेटर ऑन. एंड द नेक्स्ट आफ्टर बॉडी दैट इज अ क्लोजिंग नोट. क्लोजिंग नोट क्या होता है कि यू परसू द रिसीवर्स के मुझे उम्मीद है, आई होप कि यू वुड कंसीडर माई रिक्वेस्ट एंड यू वुड कॉल फॉर द इंटरव्यू, thanking you in anticipation. The next is you say, regards, and you will write your name, and regard after regards you sign it the letter and regards. अभी digital sign चलती है, you email it, and most of the companies they give you email to apply the job. The covering letter is the backbone of to apply any job. If you understand the covering letter, that is the most of the institutes and most of the professional companies they charge 1,000 rupees for the to teach the how to make a CV, proper CV, how to write a covering letter, and how to letter drafting and each and everything. Okay, that's fine. Okay, let's continue our class, and then covering letter we will go in detail. As I just told you, I told you earlier, I would tell you okay, how would you write the lines and how would you start and what you do. Some of the tips, you have the tips there. Few tips and structure for a covering letter. Okay, first of all, contact details. Contact details क्या होनी चाहिए कि पहले आप अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना पोस्टल एड्रेस और कॉन्टैक्ट बिल्कुल क्लियरली लिखेंगे, कोई पड़ोसी का, रिश्तेदार का, दोस्तों का नहीं. दैट इज रियली फॉर्मल लेटर, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू रियली केयरफुल. यू वुड गिव योर व्हाट्सएप नंबर, बट यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन योर एग्जाम, तो आपने फर्जी नंबर्स लिखने. कॉन्टेक्ट नंबर एग्जैक्ट नहीं लिखना, नाम एग्जैक्ट नहीं लिखना, एड्रेस एग्जैक्ट नहीं लिखना, ABCD. ईमेल आईडी भी आपने क्या लिखना है, ABCD_XYZ@, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फर्जी लिखना है और उसमें डेट भी आएगी. देन हेडिंग. हेडिंग एडिस स्पेसिफिकेशन क्या है, HR मैनेजर है, डिप्टी डायरेक्टर है, कमिश्नर है, एडिटर है, किसको वो लिख रहे हैं, किस पर्पस के लिए, तो उसको उस डेजिग्नेटेड पर्पस, जिस बंदे से जॉब अप्लाई करनी है, जिसने ऑफर की है जॉब, आप उसी को आप क्या करेंगे, सेकंड करेंगे. ओके, नेक्स्ट ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स आई ऑलरेडी डिस्कस इट. ओके जी, इंट्रोडक्शन. हाउ डू यू स्टार्ट. एट प्रेजेंट आई एम स्टडिंग. अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई इंटर्नशिप मिली है तो आप क्या लिखेंगे, आई एम स्टडिंग. एट प्रेजेंट यानी अभी, राइट नाउ आई एम स्टडिंग, फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है, या मेरा वीकेंड प्रोग्राम है, आई वुड बी अवेलेबल फॉर internship. And then if you have completed your bachelor's or master's and you are properly going to apply for the full-time job, so then what would you write down? I am working, I have been working for last 10 years, since 2005 2015. So what would you write the line, I have been working for last couple of years, whatever. And then internship, you are the student, then you apply, then, and my current, okay, if you are already employed, you are working somewhere else and you gonna switch your job, so what would you write? I have been working in the position, my current job title is, क्या लिखेंगे कि I am currently working in this organization as this designation. तो ये लाइन आपने लिखनी है. अगर आप ऑलरेडी यू आर वर्किंग समवेयर एल्स और अब आप अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं फॉर गुड इन्वायरमेंट, फॉर टू इंक्रीज योर, लाइक इंसान जो है उसका पर्पस होता है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरी इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए वो स्विच करता है अपना. और कुछ लोग चाहते हैं हमारी एक्सपर्टीज बढ़े, एक छोटे इदारे से बड़े इदारे में जाने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, तो मोस्टली आपको जो स्टार्टिंग लेनी है वो यही लेनी है कि भाई आई हैव बीन वर्किंग, कि मैं एक्सपीरियंस शो करना है, या फिर आप कहीं काम कर रहे हैं. ओके जी, रीजन फॉर राइटिंग, वजह क्या है. कवरिंग लेटर तो स्टार्टअप ले लिया हमने, एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग, एट प्रेजेंट आई एम स्टडिंग, वो तो आपने ले लिया. उसके बाद आपने इनको रीजन देना है कि वजह क्या है भाई. तो वजह ये है कि आई एम राइटिंग रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट. एक एडवर्टीजमेंट आई थी जिसके अगेंस्ट मैंने लिखा है कि आपने मुझे जॉब ऑफर की है. तो आप अब देखो, मैंने वो लाइंस बता रहा हूं, पोजीशन कोई भी हो, पोस्ट कोई भी हो, स्टेटस कोई भी हो, these are the fixed lines. You just need to add up in your covering letter and it would continue your, I'm writing to apply for position of, कोई भी position of HR, deputy HR, position for lecturer, position for software engineer, जो आपको एग्जाम पेपर में आएगी position, you would show the position.
Education and previous experience. Okay, my educational background is already, I have done the bachelor's in computer sciences, so I would be the preferable applicant for your organization. यानी कि आपकी जो previous education है throughout matric till graduation, you have been studying the computer science subjects, so that's why I am really ओके तो ये दिस इज द पर्पज, रीजन फॉर राइटिंग समझ आ गया कि मैंने आपकी एडवर्टीजमेंट पढ़ी है जिसमें आपकी जॉब आई थी इस डेट को। अच्छा, उनको ये भी मेंशन करना है कि पब्लिश्ड इन दैट न्यूज़पेपर, फर्जी लिख देना कोई भी, द न्यूज, डॉन न्यूज, एनी ऑफ द न्यूज़पेपर एंड डेटेड, के इस तारीख का वो भी फर्जी लिख दे देना। और किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो आपको उन्होंने कहा है ऊपर के डेटा साइंटिस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एचआर मैनेजर है, अकाउंटेंट है, लेक्चरर है, कहीं पार्ट टाइम जॉब है, तो एनी ऑफ द डेजिग्नेशन, अकाउंटेंट है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई मीडिया साइंसेस का बंदा चाहिए किसी को, चैनल वालों को, तो यू जस्ट राइट डाउन द पोजीशन। तो दीज आर द फिक्स सेंटेंसेस, यू जस्ट, आई विल शो यू द पैटर्न एज वेल, डोंट वरी। तो ये जस्ट मैं आपको एक मेमोराइज करा रहा हूं क्योंकि आप चाहें, क्योंकि एक रट्टा लगाना बहुत आसान होता है। हमारे बच्चे इंग्लिश के पेपर में मोस्टली व्हाट दे डू, ये सिर्फ कहते हैं टीचर हमें नोट्स भेज दें और हम कवरिंग लेटर जो है रट लेंगे, तो ये रट्टा नहीं है, दिस इज योर लाइफ। अगर ये आपने आज सीख लिया तो इट वुड चेंज योर लाइफ। आपका बॉस जब भी आपको कहेगा कि किसी को इंक्वायरी लेटर लिख दें, किसी को कवरिंग सपोर्टिंग लेटर लिख दें, किसी को कोई भी लेटर लिख दें, तो इट वुड रियली हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स यू एन आइडियल पोजीशन, आपको इस पोजीशन के लिए आइडियल क्यों बना रहे हैं? सही है, इसके लिए आइडियल इसलिए बन रहे हैं कि आई एम एम्बिशियस पर्सन, आप बड़े जोश और जज्बे वाले और एम्बिशियस हैं और आपको बड़ी एक उम्मीदें हैं और आप बड़े एम्बिशियस पर्सन है, व्हिच कीन टू लर्न न्यू स्किल्स। इतने एम्बिशियस हूं कि मुझे नए स्किल सीखने का बड़ा शौक है और मुझे जो चैलेंजेस, आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस, ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं ये फ्रेज, आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस। सही है, आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस and I'm ambitious person who is keen to learn new skill. I believe I am the best. अच्छा, जब तक आप अपने आप को बेस्ट नहीं समझोगे, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं लाओगे, तो कंपनीज ऐसे लूजर्स कंपनीज को नहीं चाहिए। सही है, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, जो आपको आता है और जो आप कर सकते हैं वो आपको बिल्कुल कहना है कि आई बिलीव आई एम द बेस्ट चॉइस फॉर द पोजीशन एज आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन माय प्रीवियस रोल। मुझे अपने इस प्रीवियस रोल में बड़ा एक्सपीरियंस है। अगर आपने जॉब की हुई है और नहीं की हुई तो कहें कि आप, आई वुड बी रियली गुड एसेट फॉर योर कंपनी एंड आई वुड really helpful for you and your organization, and I will improve my skills and I would share to my expertise to your organization, and it will be helpful for me and your organization as well. I feel that I am the most suitable candidate. क्या क्या लिखेंगे? I feel that ये लास्ट की बता रहा हूं जो 7th पॉइंट है हमारा, कि इसमें आप क्यों, आपको क्यों चूज करें, आपको क्यों इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। तो I feel that I am the most suitable candidate for this job because of my ambition to make change. मेरा जो ये ambition है ये change लेकर आएगा। सही, और 2 points more, then I will show you the covering letter as well. Okay, 2 points more. Next, closing statement. Now ये इसमें बड़ा जो ज्यादा इसमें मेंशन किया था, व्हाई, बिकॉज व्हाई यू आर सुटेबल एंड व्हाई यू आर मोस्ट परसुइंग एप्लीकेंट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें आपको दिया हुआ है कि भाई मैं बड़ा एक्साइटेड हूं टू अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू वर्क विद अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी इंसान अप्लाई करता है तो वो बड़ी और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है और सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को आपने रेस्पेक्ट देनी है, तो क्या लिखना है, वेल नोन, रेप्यूटेबल, एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज अ गुड वर्ड। तो आपने असल चीज है द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, द सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी, बिकॉज दिस इज अ कवरिंग लेटर, इज बेसिकली अ formal letter. So you need to be really careful about that. Don't use I don't, I can't, I can, I would. These types of sentences are, you should avoid repetition, you should avoid the pronoun and noun, and you would straight away you would use the like the formal sentences. Okay, the second last, closing statement. Closing statement mean thank you and please for taking the time to read through my CV resume. Okay, taking time to read through my resume CV.
आखिर में क्या लिखना है कि भाई आपने बहुत, एंड आई होप एंड आई वुड यू वुड कंसीडर एंड प्लीज डू नॉट हेजिटेट, ये जरूर लिखिएगा कि प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, मजीद मालूमात के लिए प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू फर्दर इंफॉर्मेशन, टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्ट करें मुझे। आई अप्रिशिएट योर कंसिडरेशन। अब इसमें बहुत सारे जुमले, आई होप यू वुड कंसिडर माई this request and covering my request and my and I appreciate your consideration and look forward to hear from you। सही है, तो इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस जो क्लोजिंग नोट में आप यूज कर सकते हैं। आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ यू कंसीडर मी, तो ये एज योर फॉर द इंटरव्यू, ओके, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू हेयर फ्रॉम यू। मैं आपकी जानिब से जो है मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं सुनना चाहता हूं। उसके बाद आपने रिगार्ड्स सिंसियरली योर्स लिखकर साइन करना है और अपना नाम लिख देना है। ये जो कंप्लीट मैंने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, दैट इज द कंप्लीट टिप्स एंड टेक्निक फॉर कवरिंग लेटर। और इस कवरिंग लेटर को अगर कोई भी बच्चा इसी पैटर्न पे लिखेगा तो आई रियली थिंक दैट 4.5 और 5 मार्क्स वो बच्चा लेगा। These are the sentences, these are all formal sentences, all the vocabularies. Let me show you, let's have a look for the sample of covering letter, okay? Let's have a look, please. Okay, this is our sample, really simple, but I will show you the other topics as well. Dear HR manager, क्या कहा है, किसको उन्होंने कहा है? पहले इसके ऊपर क्या आ गया टॉप पे, आपका खुद का एड्रेस आएगा, सेंडर का एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा उसका जिसने रिसीव करना है कवरिंग लेटर। और उसके बाद दिस इज अ सिंपल कवरिंग लेटर, दिस इज जस्ट फॉर द एग्जांपल, बट आई वुड शेयर यू द अदर इन द नेक्स्ट क्लास। आई वुड शेयर यू different topics and different post covering letter, okay? I'm writing to apply for the position of, आ गया भाई, अभी मैंने ऊपर समझाया कि स्टार्टिंग में बताना है कि रीजन for your writing this covering letter. So I'm writing to apply for the position of software engineer in your esteemed multinational company. अब ये मैंने पहले से ही डाल दिया है मल्टीनेशनल कंपनी का। तो आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट, अब वो पढ़ाई का बता रहे हैं कि मैंने अभी भी इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है एंड प्री इंजीनियरिंग में, एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग। लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग में आना है और आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूं। आजकल जैसे एआई का जमाना है और आजकल यंग स्टूडेंट्स जो है मैट्रिक और इंटर करके वो पहले से ही वो सीखे हुए होते हैं एआई और जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स, वेब डिजाइनिंग के कोर्स, एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, यूआई पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी वो बच्चे इंटरमीडिएट में भी वो किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने पहले बता दिया कि रीजन फॉर अप्लाइंग दिस फॉर दिस जॉब, क्योंकि कवरिंग लेटर है। ड्यूरिंग माई स्टडीज आई डेवलप बेसिक, अब क्या आप कर सकते हो, यानी क्या आपको आता है, व्हाट यू हैव द एक्सपीरियंस। तो उसने एक्सपीरियंस क्या बताया कि मेरी जो स्टडीज हैं वो मैं स्किल्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, और वो किस पर काम कर रहे हैं, आई एम फेमिलियर, वो लैंग्वेजेस भी जानते हैं, जैसे C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, तो C++ पे उसने बड़ा काम किया। आई एम हार्ड वर्किंग, अब वो बता रहा है कि उसकी जो है सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स भी बता रहा है कि आई एम हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड ईगर टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वो क्लोजिंग नोट दे रहा है कि आई वुड अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद योर रेपुटेबल कंपनी, रेपुटेबल, वेल नोन, सही है। तो ये जितनी भी नाम है रेपुटेबल, एंड वेयर आई कैन एनहांस माई स्किल्स एंड गेन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। So this is the really simple covering letter, because today is our first class and this is our new topic today. So then later on I will share you the different post and different covering letters, and you would understand the pattern would be same, the structure would be same, but you just need to add up the post, you just need to add up the degrees and your experiences you would share. You just, if you learn one proper covering letter which is connected to really formal lines, like as I discussed and I explained the structure, then you will really beautifully and you really relax with covering letter. Most of the students in Karachi, they are confused and they are really worried about covering letter, but this is the way it will make you simple covering letter writing. Thank you very much. Thanks a lot.